बुक आप पढ़ते हो या कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें समरी पहले होती है या लास्ट में होती है? लास्ट में। आपके रेज्यूमे में समरी कहाँ है? इंटरव्यू का पर्पस क्या है, इसको समझते हैं पहले। 99% बच्चे गलत समझते हैं, इसलिए रिजेक्ट होते हैं। हर साल तुम किसी को 4 लाख 3.5-4 लाख रुपए ऐसे ही दे दोगे उसको बिना जाने? बताओ, नहीं दोगे ना यार। हम अपने रिश्तेदारों को जिनको बचपन से जानते हैं उनको नहीं दे पाते, तो फिर टीसीएस तुमको कैसे पैसे देगी जब तक तुमको जानेगी नहीं? हेलो चित्रेश, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ Yes, आर यू? sir, I am fine, sir. Good morning, sir. How are you, sir? I am also good. Could you please tell me something about yourself? Yes, sir. Sir, I am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I am Chitresh Singhal. I belong to Morena. I am currently pursuing BTech from Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha. I with an aggregate marks of 8.53 CGPA. I have done my 10th from Indira Gandhi Higher Secondary School and I get 87% in my 10th class. And I have also done my 10th from Indira Gandhi Higher Secondary School and I secured 81% in my 12th class. If I talk about my technological skills, then I have a strong command on C, C++, data structure and algorithm, OOPS concept, DBMS, and MySQL. My hobbies are reading books, listening music, traveling. I am a highly motivated person and focused on work. I am a self-motivated person. So that's Okay. all about myself. Thank you again, Okay. sir. Thank you so much for your introduction. Could you please tell me something about your family background as well? Yes, sir. There are four members in my family background. My mother, father, and my elder brother also, including me. Okay. What is the Yes, sir. occupation of your father and what your elder brother is currently doing? Sir, actually, my father occupation is business. Actually, my big brother is take care of that business. Okay. So Yes. what kind of business is that? Sir, it is just like selling clothes, Okay, wholesale. selling clothes. So Yes, sir. why don't you want to contribute to his business? Um, Actually, sir, there is a elder brother also. So I think it will take care of that business, and my family think that I can do a job. And in my family background, there is no person who can do job. So I think I am the person who expects that I can do job, and I have also interest in doing job. Okay. Uh, how is dynamic memory allocated in C programming? Yes, sir. Sir, actually, dynamic memory allocation in C programming is allocated on a variable to determine runtime Okay. volume. What is the name of the memory location where dynamically allocated Yes, sir. variables are stored? Uh, Sir, malloc and calloc. No, I am asking about the memory location where they are actually stored. Are they stored in stack or are Yes, they sir. stored in heap? Sir, it is stored in the heap. Okay. What is the difference between malloc and calloc? Sir, malloc is used for dynamic memory allocation, and there is a fixed size of block. And if we talk about calloc, then there is a block of memory for particular size. There is a means individual block of memory Okay. to store And that. suppose I declare a array using calloc. Yes, So sir. will any default values be stored in that array or there will be garbage values? So there will be a garbage value. Okay, there will be garbage value. Could you please tell me the four pillars of object-oriented programming? Yes, sir. Sir, data extraction, encapsulation, polymorphism, inheritance. Okay. Could you please explain them in brief in just about 1 or 2 minutes? Yes, sir. If we talk about expression, so expression means if we do something, means we will have to work that don't want to show the user.
Suppose if I take example, suppose there is a car, then we can isolate this. And how is it performing well in the back end, we don't know. So data hiding means this is expression. If we talk about inheritance, then there is a parent-child relationship inheritance. There is a base class in which they consider some property, some member function or some data member. And after that, we consider drive class. It will take also some property of that base class and its individual property. Okay. If we talk, yes, Yeah, yeah, if we talk continue. about polymorphism, then polymorphism means that have many forms. So, if we talk about if we can go anywhere, then there is a security guard. So one security guard can say just hello, and one security guard can say please show your ID and other things. So there are many things in which we can represent a particular Okay. What is the difference between array and linked list? array. Yes, sir. Array is a data type in which we store the similar kind of data, such as int, character, int, character, float. That's all. Yeah. And the link in array there is a continuous memory allocation. But if we talk about the linked list, there is no continuous memory allocation. We can store anywhere in the data by using address store the address of that data. Okay. Uh, What was the need of object-oriented programming? Like all the basic functionalities, for yes, example, we can print prime number, we can print factorial, we can do almost every program using C language. And what was the need for OOPS concepts? actually, sir, the OOPS concept is a real-world entity in which we use class and object. So, class is define a particular group, and we know that object is a real entity. Anything can be a pen, paper, and means in a efficient way. We can use this all in C++, but in efficient way we use object-oriented programming to store the data and Okay, what is multiple inheritance? multiple inheritance. In multiple inheritance, there is a base class. After that, there is two derived class. So this is a multiple inheritance. But in C++, we don't use multiple inheritance. Multiple Okay, inheritance. okay. Suppose I am a fresher. I don't know much about DBMS. Okay, database Yes, sir. management system. Now you have to explain me what database actually is and what is SQL, right? From Yes, sir. absolute beginning. Like you can take 2 to 3 minutes, no problem, but you have to explain me from absolute basics. Yes, sir. Sir, I will have to will only database and my Database and SQL. yes, sir. So database in which we store the data in an efficient way, and we can access the data by proper structure way and easily accessible. Means there is a platform we can access the data, and it can be easily accessible by any of the user if we want to access. And these are the databases. And if we talk about SQL, so SQL represent structure query language in which user command a query, such as he want to create a table, then they can command create, and he want to select a particular thing, so he can use command select. Means if we want to retrieve data from the table, then we use structure query language. Structure query language means something wants to query question or permission. That's like that. Okay. And what is the primary difference between drop and truncate command in SQL? Yes, sir. Um, actually, sir, drop command remove the complete data and also table, and we can't undo this. And if we talk about truncate, then there is only data removed from the table, but table structure is also remain.
Okay, what is the difference between relational database or relational table and schema? Are both the same thing or there's a difference between them? The relational database is in the table form, in which a table have a data with some relations. Mm, Okay. And yes, sir. And schema? sir, schema is the structure in which we generally work on the structure, how structure is defined, and all about. Okay. Could you please tell me about your grocery delivery website project? Yes, sir. Sir, I want a actually, detailed my explanation and working of the project. Like, suppose I'm a new user, okay, and I think yes, it's a sir. website, right? So I just logged into your website now. What I'll see and how I have to proceed. Yes, sir. So, grocery delivery, my project title is Grocery Delivery Website. The purpose of this website is to deliver the grocery to the customer needs, so according to the customer needs, so in which any one person they can order the food from their home, and it can save a lot of time. So if a user enter in our website, first they have to log in. After login, they have a after login another page will open. After that, they will show food, groceries, just like that, egg, milk, and if the user click on that, they show if we want to order the food, then there is a menu that they can order the food. After that, they click on that menu, and now we can order the food after paying his details, account details, and something. The Okay. technology used in grocery delivery website used are HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React, and database. Okay. Uh, just one very simple thing, like, what is the accuracy of your project? Like, is it 100% accurate, or are there some bugs which you might have identified so far? Yes, sir. Actually, we are working on the websites for future to add more features. So Okay. actually, we can track our order. If a user want to track our order, then they can't do. So we will add more features by which user can track their food. Any idea how are you going to implement this tracking facility? Yes, in this we will use something about machine learning and by the which and the databases of customer means delivery who want to deliver. We can give a number of that delivery boy so he can contact of that delivery boy. Just like that, we Okay, will so implement this till for future. your joining will take around 6 to 7 months, I guess. So Yes, till then, can we expect it at least in your town, in Vidisha maybe, or in Morena, it's implementable, or at least to some locality of your town, you can practically implement it and try. See, the best way to find bugs in your website is not you, it's the consumer, right? Who tells you the feedback. So yes, as per me, you should immediately or as soon as possible, implement it on a very small scale, maybe at your family scale, okay, or yes, sir. maybe at your locality scale, right? Okay, and what do you think is the future scope of your website? Do it has, or are you planning to beat platforms like Zepto, Swiggy, Instamart, Blinkit and all? Yes, sir. We are planning to beat these things. Actually, we are working on this website now. So we will add more features on this website by which we can use it more better than it is currently website like Zomato, Swiggy, and these all Okay, websites. and you have used JavaScript, Node, React, MySQL, Yes, Bootstrap, right? HTML and CSS. yes. So, what is a Bootstrap grid system? Actually, sir, there were three members in my team. So Okay, actually, I take care of CSS and HTML and CSS. Mainly, I work on the front end HTML and CSS. HTML and Yes, CSS. sir. Okay. So, how many types of headings are there in HTML? So there are six type of headings in HTML: H1 to H6, H1, H2, H3, H4, H5, and H6. So H1 Okay. heading is the maximum size, and H2 just smaller size from H1, and H3 just smaller, and H6 have a lowest smaller size.
Okay. And for what TR and TD tags used? TR and TD test. Sir, actually TR is used for row for giving the row in the table. If we want to add a row, then we use TR. And if we talk about TD, then it is used for table data. If we want to data, then we use TD. Okay. How can we style headings separately and all together like in CSS? If we want to style all the headings separately, and suppose if we want to style all the headings together, how can we do that in CSS? Yes, sir. Uh, if we want to style heading separately, then there is a heading H1 and there is a suppose there in a body structure there is a heading H1 and there is a heading H2. So in CSS we use H1. After that mid bracket we can style this. And if we want to together, then there is a H1 comma H2 and that's Okay. after Uh, that, we use selector and the color, just like pink and background color we can give. okay. Suppose I give you three integer values, okay, and Yes, I sir. expect you to find the maximum of all these three values. All these three Yes. values are unique, distinct. So, Mhm. could you please tell me the logic of the program which you are going to implement for the same? Yes, sir. Uh, First, I will compare first and second. Suppose there is a number A, B, and C. Then I Okay. will compare if A greater than B and A greater than C, then A is a greater. And after that, if else, I will consider else if statement. After that, I will check if B greater than A and B greater than C, then B is greater. After that, I will check if C greater than A and C greater than B, then I will print C is greater. Don't you And think I you will, have used many steps? See, this can be done in two steps. yes, sir. Suppose you have to find maximum, right? If Yes, A sir. is greater than B and A is Yes, greater than C, then obviously A is maximum. yes, If sir. this condition does not hold true, then we are very sure that A is not greater. A is Yes, not the sir. greatest element, right? So Yes, the option of A is eliminated. Now yes, either sir. B is greatest or C is greatest. You Yes, just sir. have to compare in the else condition if B is greater than C. Yes, sir. If this is true, then B is greatest. If this is Then we, false, then then obviously C see is again. greatest. Yes, sir. Right? Okay, Yes, sir. great. Um, I just again give you an input number n, and I Yes, have sir. to check whether this n is a palindrome number or not. Yes, sir. Now, this n is not a string, it's an integer value. Yes, sir. Sir, if user enter n, then I will have to check this is a palindrome number or not. So, sir, actually, I will find the reverse of n. After that, I will check if a reverse number is equal to my actual number n. Then I can find it is palindrome number, else it is not palindrome number. So Okay. I will do this. Actually, sir, I will have to explain only logic, or I will have to write the code. No, you just have to explain me the logic. Like you'll compare the Yes, first sir. digit with the last digit. Okay. Yes, sir. So how are you going to fetch the last digit? Yes, sir. Actually, sir, I will take a while loop while n greater than 0. After that, I will take a remainder. Remainder is equal to n modulo of 10. That will care of last digit. After that, I consider sum is equal to 0. So in while function, sum is equal to sum plus r remainder. After that, n is equal to n divided by 10. After Great. g by yes, sir. So This what while are condition. we basically doing in these steps? I just want to know the understanding of your programming skills. Like, you write the program. Do you even understand what is basically happening in these steps? Yes, sir. Suppose, Uh, yeah. actually, sir, it is means reversing the digit. Okay. Okay. Yes, sir. Great. Uh, why do you want to join TCS, Chitresh? Actually, TCS is the largest growing company, and the work environment of TCS is very good.
And as a fresher, I want to join that type of company in which I can learn more and growth. Uh, and I I enhance to learn my skills and growth of the company. That's why Okay. sir, I want to join TCS. Okay. And Any TCS is my latest? dream company. It's your dream company. So what Yes, is sir. the tagline of TCS? Sorry, sir. It's your dream company. You don't know the tagline. The tagline means, uh, see, why do company put tagline? Like you are making your website, grocery delivery website. You'll Yes, sir. have a tagline, right? For Yes, sir. example, instant delivery or delivery in a Zoop or whatever it is, right? Yes, sir. So that user understand the aim of your website. Yes, Okay, so the tagline again, it means people can understand the aim of the company. Okay, any recent rewards and recognitions of TCS? Have sorry, you sir. scrolled our website, TCS website? Sir, yes, sir. TCS is the highest growing company in the world. And, That is yes, not mentioned in our website, but all the rewards, recognitions, what we do basically, in which sectors do we have, our hands, what are the allied groups of Tata? Okay, yes, not a issue. uh, One very simple question I want to ask, like you yes. have good skills, you have good CGPA, why don't you want to pursue masters? Sir, actually, as a fresher, I want to get a practical knowledge. And for master, Okay, I don't want to go in theoretical part. First, I want to take a course of you practical want to part. take That's why. practical knowledge. Suppose after Yes, sir. 3 years, you in 3 to 4 years, suppose you have gained enough of practical knowledge Yes, and sir. you are not getting enough of increment which you have planned for, so what are you going to do, the next steps? Sir, actually, I will work on that organization, and I already focused on how can I do better for this organization. I I always come on this assessment. Okay, so why don't you think after 4 to 5 years masters will be a good option? Have masters and then join some good product based companies and accordingly pursue your career. Actually, sir, I think that I will work on that organization. This is my own business, just like that. So I will work for that growth of company. So I Okay. will focus on that company. And there are many clients who will be my friends in that company. So, sir, actually, it is very difficult for me to leave that company, and I will not leave. Okay. uh, Suppose there is a delay of 1 year in your joining, Yes, sir. so how are you going to utilize that time? What all things are you going to learn or implement? And apart from studies also, what are you going to do in the coming year if in case there is a delay of 1 year in joining? Or is it Sir, that there might be many other companies who will be visiting your campus with a package either same or greater in the same job role? So is it like will you be joining them as they are offering early joining? sir, I will enhance what TCS actually want. If I wa- if I want to go in TCS, then I will for that which technology which TCS work in. Then in that time, I will work on that technology. I will enhance myself to learning these new things. And I will updately what is TCS working and uh, what type of skills TCS wants. I will work on that in my free time. But you said that you Yeah. will be working in like the technologies where TCS is working, but you don't know the rewards, recognitions, and technologies which teach. You have not even scrolled our website, and we have over 8 lakh aspirants. We have to select very few. I give you 1 minute time. Okay, this is the most important minute of your life. Just convince me, why should I hire you? Yes, sir. Sir, actually, TCS is the highest growing company, and I know I have a technical skills. TCS wants.
means I have a software skills and I am a self-motivated person and I am a hardworking person and I will always contribute to growth of the company. So, sir, Okay. and that's why I have Okay. many skills Okay. in which, Uh, Suppose one very simple question I want to ask you, like, suppose we give you a solo project or a team yes, sir. project, which one would you prefer? Sir, I prefer team project. Okay. Why so? Actually, sir, because in team project I can manage team easily. Uh, And there suppose you in are the team lead, you said you can manage team easily, you are the team lead. For example, yes, you're the sir. leader of your team. Yes, sir. So, what are you going to do to keep yourself and your team motivated? Yes, I will first assign the task according to their needs, according to their learning. Actually, there are several members in my team. Then I will assign task according they want, and I will actually do also some task. After that, I will check properly that the task is finished or not. If in some cases my team member will get suffering from fever or they go out, so I will take care responsibility of this and I will manage this at any cost. Okay. Yes. Which is your favorite game, Chitresh? Do you play any sports? Yes, actually, I play online games. Okay. Um, just last situational question I want to see, Yes, just a random question. Suppose I give you two watermelons, you have to yes, eat one of them, okay? yes, One is a circular watermelon, other one is a oval shape, the egg shape watermelon. Which one would you choose and why? sir. I choose watermelon oval shape. Why so? Sorry. Sir. Just a random answer. Yes, sir. Uh, what attracted you to IT industry? Why do you want to pursue a career in IT? There are many options. Entrepreneurship is a trending thing. People are opting for being an entrepreneur than having a job. So, what attracted you to IT industry? And according to you, what do you think is the most important quality that a fresher must have? Yes, sir. Actually, sir, IT industry is growing day by day. As many technology comes, that's artificial intelligence, machine learning, IoT. Now, these technology are increasing. So I think there is a career in IT field. This is very good opportunity for freshers. Uh, and I also have a aim from starting from my childhood that I want to go in IT sector because I have already interested in computer. I always like play online games just like website development and play. I like mission games in which I will have to complete a mission in that particular time. So these things also motivate to me in real life that I will have to do a particular task in a particular time. So I have an interest in computer from my childhood. So I want to build websites, I want to build apps, and much more working on that things. Okay. And Uh, as a fresher, yeah. I think there is a quality of website development, and there is a highly motivated and hardworking person. Okay. Uh, any extracurricular activities or apart from studies, what basically you love to do? Yes, sir. Actually, I like gardening in my free time, and I listening music in my free time. I also like traveling. Okay. You are from Madhya Pradesh. Suppose we offer you Yes, a sir. job outside of Madhya Pradesh, will you be comfortable for that? Yes, sir, I am compatible for that. And will you be comfortable for night shifts? Yes, sir. First, I will try to my work in a day. If I can't do my work, if there is an emergency that I will have to do work, yes, sir, I am agree to. Okay. Any bond related issues you have, or like that TCS has a bond Yes, agreement. Okay, so if you leave the company before the bond period, you'll have to pay fine for the same. So
Are you aware and comfortable of the same? Yes, sir, I am compatible for this. Any questions you want to ask me? Yes, sir. Actually, sir, what technology I will have to work to join your company? See, when we generate the offer letter for you, we'll be Mm, giving you a list of 10 technologies. You have to choose three out of them. mm, Okay, and if in case your the technology which you have chosen will be providing you training, and if you are scoring good marks, and if you are doing training in a better way, solving assignments, then we'll be offering you the best possible thing as per the technology you chose. Otherwise we'll have to give a random call on the technology. Okay. yes, sir. Yes, Okay, sir. so wish you all the best. Your result will be communicated shortly via Yes, sir. email. Thank you, sir. So Yes, this was the end of mock interview. yes, sir. Thank you, sir. फीडबैक डिस्कस कर लें. Yes, sir. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, लाइक वर्थ इट था या वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी? Yes, sir. But it, obviously. वर्थ इट था. Yes, sir. तो इस इंटरव्यू के बाद क्या लगता है आपको कि टीसीएस के इंटरव्यू में आप थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, या ऐसा है कि सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा परफॉर्म करना था वैसे ही करूँगा? सर बिल्कुल बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा सर. बेटर और परफॉर्म सर कर मुझे पाओगे. सर टीसीएस के बारे में और भी जानना था, जैसे सर टीसीएस इज माय ड्रीम कंपनी, हम्म, तो सर. हम्म. तो कुछ कुछ चीज़ें आपको जैसे अभी खुद ही पता चली, जैसे अभी मैं भी यस बात सर. करूँगा इस पर. अच्छा, मेरे को बस एक चीज़ जाननी है, लाइक कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मॉक इंटरव्यू का ओवरऑल? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. सर लाइक दिस इज क्या माय फर्स्ट थ्रू मॉक आउट द इंटरव्यू. प्रोसेस, क्या क्या चल रहा था, लाइक मॉक इंटरव्यू के पहले क्या चल रहा था, ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इससे और आपको उससे बेटर मिला, या ऐसा है कि यार नहीं, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था? यस सर, बिल्कुल सर. क्वेश्चन सर ऐसे थे जो सर मैं जानता था सर. एक्चुअली सर आई वाज हम्म, सर्टेन कि मैं क्वेश्चन बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा ऐसा, तो सर जो मैंने पढ़ा था मतलब उसी में से ही था मेरे रिज्यूमे में से. और हम्म, सर ये एचआर क्वेश्चन भी सर, मतलब जैसे सर आपने एक क्वेश्चन पूछा वाटरमेलन और वो, सर एक्चुअली आई डोंट नो दैट आंसर. हम्म, हम्म, हम्म. एंड सर आई वांट टू आस्क यू माय कम्युनिकेशन स्किल्स. हाँ, अभी हम बात करते हैं. यस. अच्छा, पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हो, ठीक है? मैं यस. चाहता हूँ कि यार एक मिनट आप मुझे बताओ पहले कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगा कि यार क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज़ें मैंने अच्छी बोली, क्या मैंने बुरी बोली, कहाँ मुझे लगता है कि मैं कमी रह गई, या अगर मेरा इस इंटरव्यू में रिजेक्शन होगा तो क्या आपको रीज़न लगता है कि क्या रीज़न होगा उसका? यस सर, अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन होगा तो सर ये टीसीएस इज माय ड्रीम कंपनी. और सर उसके बाद मुझे टीसीएस से इतना कुछ नॉलेज नहीं था. हम्म, एक तो सर ये पॉइंट है. दूसरी हम्म, कम्युनिकेशन स्किल सर, अगर मैं मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो चीज़ें मुझे आती थी लेकिन मैं उसे सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. मुझे आती बहुत अच्छे से थी बट उन्हें एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए. हम्म. अगर आई विल वर्क ऑन दैट थिंग्स. ठीक है, अभी ना कुछ कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले आपके रेज्यूमे पर डिस्कशन करते हैं. यस सर. तो एक तो रेज्यूमे में ना कॉलेज का आइकन चिपकाना बहुत ज़रूरी है, यस मतलब सर. लाइक प्रिंट होना चाहिए, ठीक है उसमें. यस सर. दूसरा, आपने अपनी प्रोफाइल लिख दी, नाम वाम सब लिख दिया, ठीक है? अगर लिंक्डइन की आईडी डाल रहे हो तो मेक श्योर वो यस सर. अपडेटेड हो, लाइक उसमें सारी यस सर. डिटेल्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ना आप, अच्छा एक चीज़ बताओ, कोई बुक आप पढ़ते हो या कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें समरी पहले होती है या लास्ट में होती है? लास्ट में सर, आपके रेज्यूमे में समरी कहाँ है? सबसे पहले. क्यों? दिमाग लगाओ. ठीक है, देखो ये जो रेज्यूमे होता है ना, कंपनी ये नहीं एक्सपेक्ट करती है कि आपने 2 घंटे में बना दिया. कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपकी 3 से 4 साल की मेहनत है, तो आप डे वन से इसको बना रहे हो, उस पर काम कर रहे हो. यस सर. टीसीएस में 50% वेटेज होता है आपके रेज्यूमे का, ठीक है? तो सिर्फ उसमें ये नहीं होता आपने क्या लिखा है, आपने कैसे लिखा है, क्या अलाइनमेंट है, उन सब का भी रोल होता है. देखो, इंटरव्यू का पर्पस क्या है इसको समझते हैं पहले. 99% बच्चे गलत समझते हैं, इसलिए रिजेक्ट होते हैं. उनको लगता है इंटरव्यू इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्किल्स, बस हमारी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर उनको टेक्निकली तुम्हारा चेक करना होता, तुमको नहीं लगता 1 घंटे का एग्जाम ले लेते और लाखों बच्चों का चेक कर लेते? यस सर. हर बच्चे को 20-20, 25-25 मिनट, आधा आधा घंटा दे रही है कंपनी, क्योंकि उनको आपको जानना है आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो. यस सर. हर साल तुम किसी को 4 लाख, 3.5 4 लाख रुपए ऐसे ही दे दोगे उसको बिना जाने? बताओ.
नहीं दोगे ना यार। हम हम्म, अपने रिश्तेदारों को जिनको बचपन से जानते हैं उनको नहीं दे पाते, तो यस फिर सर, टीसीएस तुमको कैसे पैसे देगी जब तक तुमको जानेगी नहीं। तो यस सर, तुमको जानना इज कॉल्ड इंटरव्यू। ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें, तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम कैसे बैठे हो, तुम कैसे बात कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा रेज्यूमे, ये सब डिटरमाइन करता है कितनी सिंसियरिटी है तुम्हारे अंदर। अगर रेज्यूमे में यस सर, गलतियां हैं तो इसका मतलब जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुमने उसी पे ध्यान नहीं दिया। जो यस सर, तुम्हारा खुद का पर्सनल है रेज्यूमे उस पे ध्यान नहीं दिया, कंपनी के प्रोजेक्ट पे तुम क्या ध्यान दोगे। तो वो आपकी समरी नहीं है, वो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है। बस यस सर, हेडिंग चेंज कर देना, ठीक है। यस सर, उसके करियर ऑप्शन। अलावा सब ठीक है। कभी भी आप स्कूल का नाम लिखो ना, तो स्कूल यस की लोकेशन और बोर्ड भी लिखा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकेशन से ये जज किया जाता है कि यार आप कहाँ से बचपन में पले बड़े हो, और फिर यस उस सर, हिसाब से रिलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है यस ना। सर, तो ये चीज मेंशन करो। दूसरा, बोर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल 81% है। अब सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो ये कम है, पर अगर यस यही सर, एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड होते तो इट वाज अ वेरी डिसेंट परसेंटेज। तो बोर्ड मेंशन करो ताकि आपको बेटर तरीके से जज कर सके, ठीक यस है। सर, अब वेबसाइट का आपने पर्पस लिख दिया, ठीक है। पहले सबसे पहले लिखो ये वेबसाइट क्या प्रॉब्लम, रियल लाइफ क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है। यस सर, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो कि क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम है, कैसे आपने इसको सॉल्व किया है, आपने एक वेबसाइट बनाई है। फिर टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज की, टूल्स क्या क्या यूज किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बाद में जाते हो, आपका रेज्यूम पहले पहुंच जाता है। रेज्यूम फर्स्ट इंप्रेशन डालता है ना। आप नहीं हो फर्स्ट इंप्रेशन, आपका रेज्यूम है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऐसे बोला यस जाता है। सर, अब जब मैंने आपका रेज्यूम देखा, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ ऐसे ही टीसीएस की टीम में एनालिसिस करती है, और आपकी यस एक इंटरव्यू शीट प्रिपेयर होती है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने देखा इसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट माइस्क्यूएल नोड.js लिखा हुआ है। भाई मैं तो पूछूंगा ना सवाल, क्योंकि आपने ये कहीं पे नहीं मेंशन किया कि ये चीजें आपने नहीं सीखी हैं। इट्स मेंशन्ड इन द resume मींस आई कैन आस्क देम। तो आपको ये चीज लिखना चाहिए कि प्रोजेक्ट में मैंने ये टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, बट मेरा रोल क्या था, प्रोजेक्ट टीम साइज क्या थी, मेरा रोल क्या था, और मुझे क्या आता है, ये लिखो। और जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करो तो ये चीज, ये बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ा। मैंने बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन पूछा तब आपने बताया कि सर 3 लोगों की टीम थी, मैंने ये पढ़ा। तो ये लगा कि आप बचने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप जब प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया था उसी समय आप बता सकते थे कि सर सो एंड सो प्रोजेक्ट है, इट इज बीइंग मेड बाय 3 people इंक्लूडिंग मी, एंड माय रोल इज दिस, एंड मैंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू HTML और CSS सीखा है ना। ठीक है, ये हो गया डन। उसके बाद अब देखो एक चीज, समझो मेरी बात को। हम क्या करते हैं, पहले चीजें पढ़ते हैं स्कूल में, पहले पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल कराते हैं, या पहले प्रैक्टिकल कराते हैं फिर पढ़ाते हैं। सर पहले पढ़ाते हैं उसके बाद पहले प्रैक्टिकल। पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल यस सर, कराते हैं। अब आपने क्या किया, आपने बोला भाई ये मेरे बारे में है, ये मेरा एम है लाइफ का, ये मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद आपको अपनी स्किल्स लिखनी थी, ये स्किल्स मैंने एक्वायर की हैं, और फिर ये मैंने प्रोजेक्ट किए हैं इन स्किल्स की बेसिस पर। आपने पहले ही प्रोजेक्ट लिख दिया। यस सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर उसी सीक्वेंस में पढ़ के आपकी एक इमेज जनरेट करता है अपने माइंड में, और क्वेश्चंस सर, जनरेट करता है, ठीक है। तो पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स लिखो, फिर यस सर, ये मैंने ट्रेनिंग एंड कोर्सेज किए हैं, उसके बाद फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, यस ठीक है। प्लस आप रिज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक कैसे कर सकते हो मेरे भाई। चित्रेश, आई एम टेलिंग यू, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका रिजेक्शन होता है तो वो रिज्यूम विल बी वन ऑफ द रीजंस। आपने कोर्सेज की स्पेलिंग लिखी COURCES जबकि SES होती है। यस कैसे कर सकते हो मेरे भाई गलती। जब आप MS वर्ड में बनाते हो रेज्यूमे, उसमें रेड लाइन करके दे देता है अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की। मतलब मैं और TCS का कोई भी बंदा होगा उसके मन में ये आएगा कि यार ये भाई अपना खुद का पर्सनल रेज्यूमे में गलती कर रहा है, तो कंपनी के मेल तो उसके खुद के पर्सनल नहीं है भाई। मान लो किसी दिन 6 बजे इसका साइन आउट टाइम है, इसको 5:55 पे एक मेल लिखने को दे दिया, ये तो 5 मिनट में 100 गलतियां करके निकल लेगा 6 बजे साइन आउट करके। परफेक्शन चाहिए उनको, वो नहीं है, है ना। प्लस
अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। रेज्यूम से उनको तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जज करनी होती है, समझ रहे हो, है ना। यस सर। लेकिन आपके रेज्यूमे से मेरे को सिर्फ टेक्निकल चीजें आपके बारे में पता चली। आपको ये चीज लिखनी है कि लाइक आपके लाइक हॉबीज क्या हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई की हैं तो वो मेंशन करना है। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन लिखना है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यस सर। ठीक है, और फिर अपने साइन करना है। यस ये तो हो गया रिज्यूम के बारे में। सर। एक्चुअली सर रिज्यूमे में सर 2 पेज का हो जाएगा सर, अगर उतनी सारी चीजें। चलेगा, किसने यस सर। बोला एक पेज का रिज्यूम चाहिए, कहाँ यस मेंशन है बताओ, सर, 2 पेज। है ना, कोई उससे यस सर। फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, एक दो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम ना। सबसे पहले तो टेक्निकल आपका अच्छा है, नो डाउट इन दैट, लेकिन एचआर वाले पार्ट में थोड़ा सा हम कमजोर रह रहे हैं, थोड़ा सा उस पर वर्क करने की नीड है। यस दूसरा एक चीज बहुत क्लियरली इस बात को समझो कि हमको ना चीजें बताना नहीं है, हमको चीजें समझाना है। तो आप पूरे टाइम ऐसे स्टेबल बैठे रहे, हैंड एक्सप्रेशन करो, हैंड मूवमेंट करो, थोड़ा सा वो सर। एनर्जी दिखाओ अपने अंदर, थोड़ा सा लाउड रहो। और एक उनके अंदर ना कम से कम अगर इंटरव्यू में तुम 5 से 6 बार बोल दे रहे हो ना कि मुझे आपकी ही कंपनी ज्वाइन करना है, मैं मर रहा था इसके लिए, वो आपसे सामने से नहीं पूछेंगे, है ना, लेकिन आपको अपने आंसर्स के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू इसको करना है। अब जैसे आपने बोला कि सर मैंने HTML CSS वाले पार्ट पे काम किया है, उसकी जगह आप ये भी बोल सकते थे कि सर मैंने HTML CSS वाले पार्ट पे काम किया है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट है, मैं बहुत जल्द बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, MySQL सीख कर आऊँगा ज्वाइनिंग के पहले। कभी भी ये मत समझो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये समझो मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं मैनेजर से एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाता है, कंपनी को लेके अपनापन आ जाता है, इंटरव्यूअर को लगता है कि यार ये अभी से कंपनी को अपना मान रहा है तो आगे जाके तो ये फाड़ देगा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिली पहले से, समझ आया क्या क्या पॉइंट्स लैकिंग है ना। हमको परफेक्शन चाहिए ना भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका सिलेक्शन अभी भी हो जाएगा, बट अगेन जितना परफेक्शन होगा उतना चांसेस बढ़ेगा, है ना। और कुछ आपको मेरे से पूछना है? सर यही सर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सर पूछना नहीं, था। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बट थोड़ा सा लाउड रहो, थोड़ा सा एनर्जेटिक। आपका पहला इंटरव्यू है, मैं तीसरा ले रहा हूँ अभी, मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूँ या आप? सर समझ रहे हो, यस तो इस चीज को समझो, इस चीज को अपने अंदर लेकर आना सर। है ना। ऐसी एनर्जी देखो, अपन को ना अपने सिलेक्शन के रीजंस देने हैं, यस सर। है ना। आपका रेज्यूम बहुत अट्रैक्टिव बना तो हो सकता है वो आपको इस बेसिस पे सिलेक्ट कर ले कि यार ये बंदे की कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है उस जॉब रोल के लिए सिलेक्ट कर ले। आपका टेक्निकल अच्छा ना लगा, हो सकता है आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अच्छा लगा हो सकता है आपको कोडिंग वाले पार्ट में ना रख के क्लाइंट डीलिंग वाले पार्ट में रख दें। यू हैव टू गिव देम रीजंस फॉर सिलेक्शन। एक बार सिलेक्शन हो गया फिर प्रोफाइल तो हम चेंज कराते रहेंगे भाई। एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तुम पर इतना टाइम और पैसा TCS ने इन्वेस्ट कर दिया, फिर तुमको वो जाने नहीं देंगे, फिर तुम्हारे हाथ में चाबी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो लेकिन पहले अपन को थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट, वाइंड अप करें इसको। यस सर। ठीक है, सर ये सर इंग्लिश में जो था सर वो कैसा था सर, जो इंग्लिश में सर इंग्लिश बोला? आपकी अच्छी है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, और डूइंग गुड। यस सर। थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा एनर्जेटिक लाउड। बस, ओके ठीक सर। है, थैंक मुस्कुराते यू हुए। सर। यस। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर, जा करके अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।